Good morning, students. Today I am going to start chapter number 7, Equilibrium, Part 1. So, what is equilibrium? Equilibrium is a process in which the rate of the forward reaction equal to the rate of backward reaction. इक्विलिब्रियम वो प्रोसेस होता है जिसमें एक रिवर्सिबल इक्वेशन के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन रेट के इक्वल होता है. Now, equilibrium mixture, a mixture of reactants and products in the equilibrium state is called an equilibrium mixture. इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है उसे इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं. इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड बोथ इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. हम इक्विलिब्रियम फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के प्रोसेस में एस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड नाउ द इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस. First of all, the solid-liquid equilibrium. The equilibrium is represented as in the given example. The ice is in equilibrium with water, and the rate of the melting of ice equal to the rate of freezing of water. And the system here is in the dynamic equilibrium, and following can be inferred in the given example. Now next is इसमें क्या होता है, both the opposing process occurs simultaneously. जितनी आइस मेल्ट होती है और उतना ही वाटर जो है वो फ्रीज होता है, तो वो एक साथ ही दोनों प्रोसेस चलती हैं. एंड बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कांस्टेंट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज liquid vapor equilibrium. And in this equilibrium, the water is in equilibrium with water vapor. The equilibrium can be represented by H2O liquid. It is in equilibrium with H2O vapor, and rate of the evaporation equal to rate of condensation. When there is an equilibrium between the liquid and vapor, it is called liquid vapor equilibrium. Next is solid vapor equilibrium. This type of equilibrium is attained when solid sublimes to vapor phase. For example, when the solid iodine is placed in a closed vessel, the violet vapors start appearing in the vessel, whose intensity increases slowly, and then it increases with time, and ultimately it becomes constant. And equilibrium is represented by I solid is in equilibrium with the I vapor. Now, characteristics of the equilibria involving physical process. इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है. फर्स्ट इज द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर. इक्विलिब्रियम केवल क्लोज्ड सिस्टम में और गिवन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है. नेक्स्ट, एट द इक्विलिब्रियम the measurable properties of the system remain constant.
इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, these remain constant. The equilibrium is dynamic since both the forward and the backward processes occur at the same rate. इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस सेम रेट से चलती हैं. Next is at equilibrium the concentration of the substances become constant at constant temperature. constant temperature पर जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. एंड द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट represents the extent to which the process proceeds under equilibrium is achieved. हम इसमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उस वैल्यू से वी नो कि इक्विलिब्रियम जो है कितना प्रोसीड अभी होने में टाइम लगेगा या प्रोसीड हो चुका है. इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस like physical equilibrium, it can also be achieved in chemical process involving reversible chemical reactions when carried out in closed container. फिजिकल इक्विलिब्रियम की तरह ही केमिकल इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल होता है, बट इन अ क्लोज्ड कंटेनर. फॉर एग्जाम्पल, when nitrogen gas react with hydrogen gas, ammonia gas is formed. And the dynamic nature of chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber's process. Haber started his experiment with the known amount of nitrogen and hydrogen at high temperature and pressure. At regular intervals of time, he determined the amount of ammonia present, and he also found out that concentration of the unreacted nitrogen and hydrogen. After a certain time, he found that the composition of the mixture remained the same even though some of the reactants are still present. हैबर ने अमोनिया सिंथेसिस में इस एक्सपेरिमेंट को किया और देखा कि स्टार्टिंग में अमोनिया गैस बनती है एंड देन आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाता है प्रोसेस, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है. सो इट मीन्स कि दिस कॉन्स्टेंसी इंडिकेट्स द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. इन जनरल, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द केमिकल इक्विलिब्रिया कैन बी शोन बाई ए जनरल इक्वेशन. अगर हम लिखते हैं a plus b and it will give you c plus d, and after a certain time the two reactions occur at the same rate and the system reaches a stable state of equilibrium. This can be shown by the given figure. Now next is the law of chemical equilibrium. At constant temperature, the rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of the reactants, each raised
to a power equal to the corresponding stoichiometric coefficients as represented by the balanced chemical equation. And so that in the given example, if we see A plus B and इसमें small a and small b represent the stoichiometric coefficients, and when we write the equation in the form of the equilibrium constant, then we Kc equal to the molar concentrations of the product upon reactant. So C is raised to the power small c and D is raised to the power small d upon A, capital A is raised to the power small a and capital B is raised to the power small b, and it is a constant, and this is called the Kc, and this equation is known as equilibrium equation. And this is if we take an example, the 4NH3 gas plus 5O2 gas, and it will give you 4 molecules of nitric oxide NO gas plus 6 H2O gas, and we can write in the form of the equilibrium constant Kc equal to molar concentration of NO power 4 into molar concentration of water power 6 upon molar concentration of ammonia NH3 power 4 into molar concentration of oxygen power 5. And in this way we can write the equilibrium constant for the reactions. Thank you, students, and it is enough for today. Subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, students, for watching this video.